The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. This is the Asia Cup, the tournament. Room, and what a shot that is. That is an amazing shot. Speaking from the personal experience. It shows. And the Afghanistan Shiryakh. While on the field there's been fire, you want that Shiryakh, which is a very tasty milk, flavorings and sugar mixed in a container. Then you've got a great variety of fruits as well. Melon, watermelon, pomegranate. That's into the gap. Runs. Tumbling effort by Fakhr Zaman, 2 runs. Absolutely, the fruits in the region have been of a great taste. Pomegranate, you said, are of amazing taste, really sweet, and so are the melon towards the north of Afghanistan. Apples towards the south, Logar, in Sarh, they are of a great taste. So yeah, I mean, we are blessed with the region, the fact that we get to enjoy really, really good fruits. They say that Babur, who was the Mughal emperor, didn't like the fruits of subcontinent, and so he wanted to go back, and he did, because he's missing his melons and pomegranate. And we have the Babur tomb in Kabul, and it's such a beautiful place over there, the way they have built it. Lots of trees, beautiful place for the families to come and enjoy their time on the weekends. Strong appeal and given by the umpire. Will he go for another DRS? Everyone looks super confident that there's an outside edge. Will he go for another DRS? What is he thinking? He's asking his partner whether to go for DRS or not. Beautifully bowled by the pacer. He's asking his partner whether to go for DRS or not. He's a goner. Beautifully bowled. No shame in getting out of the pacer. His partner whether to go for DRS or not. He was forced to play at that line, and beautifully just a hint of outswinger, and he was taken out of his partner whether to go for DRS. He was forced to play at that line, and but this was beautifully a beach of a outswinger, and he was taken out of his partner whether to go for DRS. He was forced to play at that line, and this was beautifully hint of outswinger, and he was taken out of his partner whether to go for DRS. He was forced to play at that line, and just a hint of outswinger, and he was taken out of his partner. And he'll feel very happy and pumped up, because you really feel it when you miss the wicket and you just say, wish we had gotten the DRS. You would finally very happy and pumped up, because a very careful, you really feel it when you miss the wicket and you just stabilizing innings, say, wish we had gotten the DRS. Finally in 35 because a very careful, you really feel it when you miss the wicket and you just stabilizing innings, say, wish we had gotten the DRS.
got to be better than that. Umar Zaid beaten all ends up. And this was very much on the cards. Pakistan banking on the strength of pace and denting the top order. Whereas Afghanistan were keen to produce a pitch that will help their spinners, and they demolished Pakistan through spin. So this is quite an intriguing contest. On the same pitch, it's Pakistan's pacers who've been outstanding. And on the same pitch early on, it was Afghanistan's brilliance in the spin department that bamboozled Pakistan. Two extremes, but both working for both sides. I think I'll give the credit to the curator, because when I talked to him earlier, he said that this is a fair wicket which will help the pacers as well as the spinners, knowing that Afghanistan's strength is the spinners. Take nothing away from the pace of Pakistan. Pakistan is known for their pace forever. I mean, think about Wasim Akram, Waqar Yunus, Imran Khan, and Asif, and so many. It's so nice and such a joy to see them firing that scintillating pace. Well, he's been outstanding. 2 for 8, 3.5 overs. Into the gap and 4 runs. That's nicely timed. Slicing it past that man at cover and point. Spoils his last ball, but it's still fabulous figures for Haris Rauf. 2 for 12. It's 39 for 5. डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे आज होगा टक्कर का मुकाबला बिहारी कड़ाई और तेल का तड़का एरियल का नया ब्लू फॉर्मूला जिद्दी दागों का करे सफाया It's turning out to be a low-scoring contest. 201 plays 39 for 5. This is still a manageable or doable job if they bat well right till the end. 163 of 36 overs. It's not a Herculean task, but with 5 wickets down, you've got to side with Pakistan. Required run rate is 4.52. It's not humongous. It's just that follow wickets and quality of bowling is making it tough for Afghanistan. Absolutely, they need to stick there and build a partnership the way Pakistan did. It was Imam ul Haq who took the responsibility for Pakistan, and then later in the innings, Shadab, together with Naseem Shah towards the end, put those crucial runs on the board. And that's what is required for Afghanistan at the same time as well to do. This is a recognized player. I mean, maybe this is the last recognized player out in the middle. Azmatullah Umar Zaid, when he came in the under-19 and he played an innings of brilliance against New Zealand, making sure that Afghanistan qualifies to the next level. After that, he really hadn't done much. But then in the recent Bangladesh series, he got his maiden 50. So he's been kind of batting and bowling all-rounder for Afghanistan, and he's been finding now the momentum to be able to play as a batter in the Afghanistan side that Afghanistan needs. But this is the defining moment. You take your team out of trouble and your name will be on the record books and say, yes, that was the man who could save Afghanistan from here. He's got to find the good length. Osama Mir. It's good of Babar to introduce him before Shadab. Should have given him a bit of confidence. Just relaxing him a little bit. It's always is tough when you're wearing green colors of Pakistan. There's so much of competition and so much expectations of you. What he has to do is to take it easy and relax a little bit, Osama. Oh, that's not a good ball. That'll go away for 4. It's a half-tracker that's been tracked towards the fence. It's kind of day when you struggle finding your rhythm in line and length. How I've seen Osama Mir bowl so far, he tried to also throw a bait and
of having lost 5 wickets. If you find a loose delivery, you cash it on and you get the boundary for yourself. Easily managed through mid-off. Good over for Afghanistan. After 15, 5 down for 47 Afghanistan. जीरे का जायका लिए हमारी बातों सा खस्ता जीरा प्लस। Gee, we've been treated to an exhibition of fast bowling here. Haris Ralph and Nasim Shah and Shaheen Shah Afridi, the very best, right out the top draw. A consideration for a second slip going in here. Ralph has got it. I was looking for that word, exhibition. Indeed it is, and what a show. The Afghanistan batters have not just been able to find answers. Nicely played, controlled. Yeah, you know, when I say I feel a little bit for Afghanistan, is that the more they play against this type of opposition, the better they will get, because they're such a talented group of players, this particular team, but there's still room for growth. For so long they've been given games against just certain teams, Zimbabwe, Ireland, and they've played them over and over again. Now we're starting to see them being exposed to more and more. They play against Bangladesh once or twice, now they beat Bangladesh. Now they get a first bilateral series against Pakistan. You know, these guys, there's a big difference. There's a big difference between 138 kilometers an hour and 145 kilometers an hour. And these 3 Pakistan bowlers are genuine quick bowlers, and you need to play against it to get accustomed to it. Well, that's the only way. You said it exactly right, but you can see in the dugout that the Afghanistan side may just feel that they did the first spot right. They were able to get Pakistan bowled out, and it's a very manageable and chaseable total of only 202 runs. But another very soft dismissal. Haris Rauf's been on fire. He gets the wicket of Muhammad Nabi, and Afghanistan are in all sorts of trouble. Well, the pitch is a slow one. We've said that the ball is stuck in the wicket quite often throughout the day and the evening, and this one just holds a little bit. Haris Rauf is an out-and-out quick bowler, but just stops ever so slightly, which leads to Muhammad Nabi hitting that in the air. Simple catch, really. Sometimes you bowl cracking deliveries, other times it's just an ordinary delivery like that, which leads to a wicket. He deserves the success that he's got this evening, Haris Rauf. Muhammad Nabi goes for 7, Afghanistan 48 for 6. डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। Well, here's a man who will never give up a cause. Rashid Khan, brilliant with the ball this evening. 2 for him. Dangerous batter. Many feel he's been underutilised. Around batting at number 8 in various leagues, and 9 and 10. But he too. दोस्तों कहले कि यहाँ पर अब शानदार बॉलिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं अपने ओवर की 5वीं।
And look at the dismissal just once again. The ball stopping on Mohammad Nabi. And he wanted to drive it away from the fielder. And there are bad days that the ball just goes straight into the hand of the fielder. And you can see it from the celebration because they know how vital the wicket of Mohammad Nabi was for Pakistan to be able to secure a win for themselves here. But you're spot on, HD. The more Afghanistan plays against such teams, the better they'll get. All over. Didn't take long for Haris Ralph to knock over the off stump of Rashid Khan. That absolutely too good for Rashid Khan. That space that talks, and you do not have the answer for that. Haris Rauf has been on fire. He's got 4 for, and look at this, no clue, no answer from Rashid Khan. It just passes through and dislodges the bail. What a sight for the fast bowler. And he celebrates this. Jubilant Pakistan side. They can sense the victory from here. And again, there was just a puff of dust, wasn't there? When the ball hit the ground, there was just a puff of dust. But Rashid Khan goes without scoring. Afghanistan, well, they're nearly done for here, 48 for 7. ट्राई पेंटिंग, जिसमें है प्रोवी फॉर्मूला जो बालों को मजबूत बनाए और गिरने से रोके। हेयर फॉल को इग्नोर ना करो, सॉल्व करो विद पेंटीन। गेंद के साथ जो कि दौड़ते हुए आए गेंद किया राशिद, a lovely delivery by Haris. Abdul Rahman, the all-rounder, just his second one-day international match, and he having to deal with Haris Ralph, who is steaming in. And again, that's what pace does. It makes you push at things that you wouldn't normally do. The end of the 16th, 48 for 7. ट्राई पेंटिंग, जिसमें है प्रोवी फॉर्मूला जो बालों को मजबूत बनाए और गिरने से रोके। हेयर फॉल को इग्नोर ना करो, सॉल्व करो विद पेंटीन। जीरा प्लस चाय के साथ पेश करके तो देखो, फिर देखो कैसे सालों का फासला एक सुर में मिट जाता है। यही है गुफ्तगू का प्लस। जीरे का जायका लिए हमारी बातों सा खस्ता जीरा प्लस। आपस की गर्मा गर्मी अपनी जगह और शूट से वापसी पे रहबर के हॉट पॉट जो खाने को रखे देर तक गर्म। रहबर फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार। Always felt that 202 was needed for victory was going to be a challenging total because the surface hasn't been an easy one to bat on and not an easy one to score on. There hasn't been big seam movement, but there's been indifferent pace and there's certainly been some turn for the spin. But this is Rashid Khan being done by pace here. It goes past the outside edge. There's a little bit of seam movement. It just holds its line. But that's a good delivery to get second up. And that tells you what craftsmen the Pakistan Pacers been. Just a little bit of movement, but that is enough to be able to holds it. Distract the batsman and get the batter of him. He's off the mark. That'll make him feel comfortable. I actually feel for Abdur Rahman when he made his debut against Bangladesh. It was the third game. The 2 games earlier Afghanistan had won, and they had really comprehensively won those 2 games. He comes and makes debut in the 3rd game, and then he finds himself in the bother, and he's put into a situation where he's expected to runs. He's a good batter. He's scored some half centuries back in the domestic cricket in Afghanistan, but that's too much to ask for.
I'm so frightened to talk up this young man because I was talking up Rashid Khan as a prospective sort of all-rounder, and he got his off-stump knocked over, but I think this fella's a good all-rounder as well. Well, there we go. I told you he is. Well, he appreciates the compliment and hits a beautiful shot. With this boundary, it's the end of the over. Afghanistan are 54 for 7. जीरा प्लस चाय के साथ पेश करके तो देखो, फिर देखो कैसे सालों का फासला एक सुर में मिट जाता है। यही है गुफ्तगू का प्लस। जीरे का जायका लिए हमारी बातों सा खस्ता जीरा प्लस। आज होगा टक्कर का मुकाबला, बिहारी कढ़ाई और तेल का तड़का। एरियल का नया ब्लू फॉर्मूला जिद्दी दागों का करे सफाया। It's only 54 on the board, chasing 202 in this very first Afghanistan versus Pakistan ODI Series 2023. It is a huge task. The only hope for Afghanistan is Azmatullah Omarzai, while for Pakistan, they have been all over Afghanistan, haven't let Afghanistan breathe. So that last delivery of the previous over, Omarzai slapped it down the ground, but I think he's done an intercostal muscle in the process. He was very uncomfortable. He called the physio on the ground, and as a bowler, the one thing you don't want to do is an intercostal muscle. This is so that last weeks delivery and weeks of the previous rehabilitation, and with an Asia Cup and a World Cup just around the corner, this will not be good news for Afghanistan, but in particular Azmatullah Omarzai. If there were anything missing in this, it has been the injury to Azmatullah Omarzai. The only hope, and he finds himself into the spot of bother and believes he cannot continue, and he gets retired hurt. That is not a good news for Afghanistan. It actually looked a little bit like it was an injury that occurred while he was bowling, because it seemed as though everyone was aware that he was nursing that side, and then that stroke down the ground might have just aggravated it, and he immediately turned to face the dugout and said, "I'm done here." It's a pity. He's a lovely cricketer, Azmatullah, he really is, and he's going to be a big loss if it is a serious injury, particularly if it's an intercostal. Well, at least what Afghanistan fans can hope for is a few good shots from Mujib Zadran. Funny thing is, few of his mates call him the Chris Gale during the practice matches. He can hit a few, at least some for the entertainment. There's a thing about a practice match, Fadai, is that there isn't a consequence. So you can swing as hard as you want. Absolutely, that's the dire fact. One bad shot and you get out. Fallen well short. It didn't even bother running, so it looks like Abdul Rahman is going to be the man that's going to try and take as much of the strike as possible. And that's also a big ask of a man playing in just his second one-day international to try and farm the strike against an attack like this. I was telling you earlier that I really feel for him because it's his second game only, and he's both the times been in a situation where he's just not enjoyed for the top order having put some run where he could bowl and try and express himself, because he is a genuine pace bowler for Afghanistan. But at the same time, he's a good batter, but then you cannot just expect too much of him. It's a lot. It's under 60 and Afghanistan has already lost 7 wickets. Not in control. It'll fall short to the man at fine leg. Haris Ralph, for a brief moment, thought he had 5.
drop to his knees. He absolutely deserves this. He's really bowled well. He's देना है आप सभी ने हमें जल्द deliveries. स्कोर 7 के नुकसान पे 17 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा. He just didn't have the answer for, and you can tell he really wants that fifer. It's a milestone. Any bowler any day will want to take the fifer. And it is on the cards. He's got another 4 overs. कमाल की बॉलिंग होते हुए दोस्तों आज टीम पाकिस्तान की तरफ से. लो स्कोरिंग जो है वो डिफेंड कर रही है टीम पाकिस्तान. सो एक इनक्रेडिबल एफर्ट जो कि अब देखने को मिली है टीम पाकिस्तान के इन प्लेयर्स की तरफ से आज. One thing that Babar Azam won't want to do is overbowl his bowlers. And when I say overbowl, I'm talking about long spells in this type of heat. एशिया कप की शुरुआत 30 तारीख से होने जा रही है. ओवर की अगली गेंद ऑस्ट्रम के बैट की गेंद, बड़ी अपील, कैच की बड़ी अपील हुई है लेकिन नॉट आउट दिया गया है अब अंपायर की तरफ से. रिव्यू देखते हैं कि टीम पाकिस्तान लेगी या नहीं लेगी. और यहाँ पर अब प्लेयर्स आपस में इकट्ठे होते हुए रिव्यू लेने का फैसला कर लिया है. पाकिस्तानी साइड ने रिव्यू लेने का फैसला कर लिया है दोस्तों. 5वीं विकेट हारिस को मिल सकती है अगर प्लेयर आउट होते हैं. और अब देखते हैं कि वो अपना फाइफर जो है वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. मुजीबुर रहमान जिन्होंने गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की, कवर्स के एरिया में खेलने की कोशिश की, लेकिन वो अब देखते हैं कि किनारा तो नहीं दे बैठे कहीं इस गेंद को. तो दोस्तों रिप्ले की मदद से अब देखा जा रहा है और अल्ट्रेज की मदद से भी देखा जाएगा कि ये गेंद जो है वो कहीं बल्ले से तो नहीं टकराई है. 4 सब्सक्राइबर हमें और चाहिए 7,400,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए. तो दोस्तों अल्ट्रेज की मदद से देखा जा सकता है कि ये गेंद बल्ले के पास से गुजरते हुए गई है अब विकेट कीपर के दस्तानों में. तो इसलिए नॉट आउट का जो डिसीजन है वो अब मेंटेन रहते हुए रिव्यू को लूज कर दिया है टीम पाकिस्तान ने. अंपायर का ये डिसीजन जो कि अब मेंटेन रहा है. सो रिव्यू को लूज करते हुए टीम पाकिस्तान, लेकिन ये चीज इतनी मैटर नहीं करेगी. 55 है स्कोर 7 के नुकसान पे. आउटस्टैंडिंग बॉलिंग. भाई साहब नाम ले लें. भाई नाम अगर एक बंदे का लेंगे तो फिर दूसरे बंदे नाराज हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा दोस्त है तो इसलिए नाम लेना पॉसिबल नहीं है. माजरत आप सभी के लिए कि नाम जो है वो लेना थोड़ा मुश्किल बन जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं. तो फिर एक बंदे का नाम लिया तो फिर दूसरों का नाम लिया तो वो फिर नाराज़ होंगे. तो अब उसामा मीर को रिप्लेस कर लिया है शादाब खान ने, जो कि बॉलिंग के लिए आ चुके हैं, जिनके ओवर की ये पहली ही गेंद इस गेंद को संभलते हुए बैटर ने खेल दिया है कवर्स के एरिया में. कवर्स की पोजीशन पर फील्डर अब तैनात, जिन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए किया है वापस. 55 है स्कोर 7 के नुकसान पे. यहाँ पर एक बार फिर से शादाब, जिनके ओवर की अगली गेंद ऑस्टन के बैट की ये गेंद, इस गेंद को कवर्स के एरिया में खेला. कवर्स की पोजीशन पर फील्डर अब तैनात, जिन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए किया है वापस डॉट के साथ. 55 है स्कोर 7 के नुकसान पे. 18 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय टीम पाकिस्तान टुडे. यहाँ पर अब बॉलर एक बार फिर से जो कि आए गेंद किया, ये गेंद जो कि अच्छी गेंद थी, टप्पा खाते हुए हल्की सी अंदर की तरफ आई ये गेंद, जिसे संभलते हुए बैटर ने खेल दिया है. अगेन खेलने की कोशिश में थे लेकिन नाकाम रहे वो इस गेंद को इतने अच्छे से खेलने में. तो 55 है स्कोर 7 के नुकसान पे. यहाँ पर एक और अच्छी गेंद, शादाब खान की गुगली गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए ये गेंद गई है. अब बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए ये गेंद जो कि गई है अब पॉइंट के एरिया में. कोई भी रन जो लेने का मौका मौजूद नहीं है. 55 है स्कोर 7 के नुकसान पे. थैंक्स वासु भाई. शो लाइव स्ट्रीमिंग. भाई लाइव तो नहीं दिखा सकते, जो कर सकते हैं वो हम आपके लिए कर रहे हैं. एक स्लिप की पोजीशन पर फील्डर को मतलब बाबर आजम जो है वो दोस्तों स्लिप की पोजीशन पर मौजूद है. यहाँ पर ओवर खेली गेंद, बड़ा शॉट, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में और एक आसान सा कैच. विकेट फॉर टीम पाकिस्तान. विकेट फॉर टीम पाकिस्तान. और अब 8वीं विकेट गिर चुकी है टीम अफगानिस्तान की. व्हाट अ लवली पीस ऑफ बॉलिंग बाय दी टीम पाकिस्तान है. 8 आउट हैं क्योंकि 9वें प्लेयर जो है वो इंजरी की वजह से बैटिंग के लिए नहीं आ पाएंगे. तो 9 ही विकेटें लेनी है टीम पाकिस्तान को. 10 विकेटें नहीं लेनी बल्कि 9 ही विकेटें लेनी है टीम पाकिस्तान को. और अब पाकिस्तान की टीम जो है वो दोस्तों जीत की तरफ रवा दवा. 7,05,000 सब्सक्राइबर्स भी जो है वो पूरे होने वाले हैं. 37 सब्सक्राइबर्स की हमें और ज़रूरत है. शादाब खान को पहले ही ओवर के अंदर विकेट मिल गई है और शादाब का कॉन्फिडेंस और मोराल जो है वो इस विकेट की वजह से यकीनन काफ़ी हाई होगा. लास्ट विकेट है दोस्तों ये, जो कि
अब आएगी और आखिरी विकेट जो है वो देखते हैं कि कब जाकर गिरती है, क्योंकि इसके बाद जो 10वें प्लेयर हैं वो इंजरी की वजह से बैटिंग करने के लिए नहीं आ पाएंगे उमर जई। अफगानिस्तान are nowhere. It's 55 for 8. ट्राई पेंटिंग, जिसमें है प्रोवी फॉर्मूला जो बालों को मजबूत बनाए और गिरने से रोके। हेयर फॉल को इग्नोर ना करो, सॉल्व करो विद पेंटिंग। तो दोस्तों 55 है स्कोर, 8 के नुकसान पे अब 18 ओवर और 5 गेंदों का खेल हो चुका है पूरा। लास्ट ये विकेट है, लास्ट विकेट है दोस्तों। ये अफगानिस्तान की टीम जब इनिंग्स ब्रेक आई थी तो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे अफगानिस्तान के फैंस, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वो अब इस मैच को जीत जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की टीम के बॉलर्स ने बताया कि इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के खिलाफ जीत पाना। लवली डिलीवरी बाय दी बॉलर नाम है जिनका शादाब टप्पा खाते हुए ये गेंद जो कि हल्की सी बाहर की तरफ निकली, इस गेंद को बैटर ने लीव किया और लीव करते हुए जाने दिया विकेट कीपर के पास। 55 है स्कोर, 8 के नुकसान पे। और इसी के साथ आप सभी ने मिलकर 7,500,000 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर दिया है चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच एवरीवन इस लवली और शानदार स्पोर्ट के लिए। कल को इंडिया के जो दोस्त हैं वो भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही कमेंट्री कल को हम आपके साथ इंडिया और आयरलैंड के मैच के अंदर लेकर आएंगे, जिसके बाद फिर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अगला मैच होगा उसके अंदर भी लाइव होंगे। और इसी तरह ही जो है वो हम आपके साथ लाइव मौजूद रहने वाले। 55 है स्कोर, 8 के नुकसान पे। अब 19 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा। पाकिस्तान की टीम की कोशिश है कि 20 ओवर्स तक इस मैच को फिनिश कर दे, यानी कि इस ओवर के अंदर पाकिस्तान की टीम इस कोशिश में होगी कि मैच को ख़त्म किया जाए। हारिस रऊफ अब आज के बॉलिंग के लिए, हारिस रऊफ अपने 5 ओवर की तलाश में। यह लास्ट विकेट है दोस्तों, क्योंकि एक बैटर इंजरी की वजह से हमें बैटिंग करते हुए दिखाई नहीं देंगे। मुजीबुर रहमान ने इस गेंद को स्मैशिंग वे में खेल दिया है डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के फील्डर के दरमियान में से 4 रनों के लिए जोरदार तरीके से खेला गया ये शॉट और मिल गया है अब चौका। और चौके की मदद से अब स्कोर हो चुका है 59, 8 के नुकसान पे। अफगानिस्तान की टीम का लोएस्ट एवर स्कोर कितना है ये भी मैं आपको बता देता हूं, जो दोस्त पूछ रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम का लोएस्ट एवर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर स्कोर कितना है। 859 है स्कोर, 8 के नुकसान पे। पाकिस्तान की टीम की नंबर 1 की उम्मीदें अभी भी कायम और दायम हैं। पाकिस्तान की टीम अगर अगले 2 मैचेस को जीत लेती है तो नंबर 1 की टीम बन जाएगी। मुजीबुर रहमान है अब स्ट्राइकर एंड पे मौजूद, यहां पर ओवर खेली गेंद और बड़ा शॉट, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे। और इसी के साथ हारिस अपना 5 ओवर पूरा कर चुके हैं और पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान की टीम को एक तरह से ऑल आउट कर दिया है। अब देखना यह है कि आखिरी जो बैटर हैं वो बैटिंग करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, आखिरी बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इंजरी की वजह से वो बैटिंग को जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाए थे। बहरहाल अब देखते हैं कि बनता है क्या। और यहां पर पाकिस्तान की टीम ने 5 wickets for Haris Rauf and Pakistan have won by 143 runs. That is an exceptional performance from a very talented fast bowling attack. Well, he gets his 5 for the first time and this is his best figure. Also against Afghanistan, 5 for 18. And what a show this has been. He was bowling fire. Genuine pace. जरा बोचाल मचा दीजिए जरा लाइव चैट के अंदर जाकर और क्या लेके इसके साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से करिएगा, सब्सक्राइब जल्दी से करिएगा अगर आपको ये जीत अच्छी लगी है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस कहां पे गए हैं आप सभी, जरा बोचाल मचा दीजिए जरा लाइव चैट के अंदर जाकर और क्या लेके इसके साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जरा पता चले कि किन किन दोस्तों को ये जीत जो है वो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। पाकिस्तान की टीम ने कमाल परफॉर्मेंस दी है आज और इस तरह पाकिस्तान की टीम जो है वो इस पहले वनडे मुकाबले के अंदर विजेता बनी है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शानदार परफॉर्मेंस, जानदार परफॉर्मेंस, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जी हाँ दोस्तों, तौबा के साथ पेश पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज 2023 का ये पहला वनडे मुकाबला और पाकिस्तान की टीम ने कमाल परफॉर्मेंस दी है दोस्तों। आज पहली इनिंग्स के बाद किसी को भी इतना आसान नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने
इस मैच को जो है वो यहाँ पर जीता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मार्जिन से जीता है। 142 रनों से टीम पाकिस्तान ने जीता है और अफगानिस्तान की टीम को जो है वो 59 के स्कोर पर उन्होंने आउट कर दिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इससे पहले अफगानिस्तान की टीम जो है वो कह ले के 58 के स्कोर पर आउट हुई थी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने 59 के स्कोर पर ऑल आउट किया है। तो ये अफगानिस्तान का सेकंड लोएस्ट टोटल है जो कि अब बनाया है उन्होंने और ऑल आउट हुई है टीम अफगानिस्तान। आज के इस मुकाबले के अंदर हारिस रऊफ की बॉलिंग परफॉर्मेंस लाजवाब रही और पाकिस्तान की ओवरऑल जो बॉलिंग है वो लाजवाब रही, जिसकी वजह से उन्होंने ये मुकाबला जीता है। और इस बेहतरीन बॉलिंग के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। हारिस रऊफ अपना 5 पूरा करने में कामयाब हुए, जिनका ये पहला 5 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और इनकी बेहतरीन बॉलिंग फिगर्स बनी और अफगानिस्तानी बैटर्स के पास कोई क्लू नहीं था कि वो इनको अच्छे से खेल पाते। आज अगर मैच की शुरुआत के बारे में बात की जाए तो टॉस हुआ आज और टॉस को जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम ने बैटिंग करने का डिसीजन लिया। यहाँ पर अगर ओवरऑल रिकॉर्ड को देखा जाए तो पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो इतनी कोई खास नहीं हुई। 62 के स्कोर पर 4 विकेटों को लूज कर दिया और रिकॉर्ड के हिसाब से इस ग्राउंड के ऊपर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 9 मैचेस को जीता हुआ, बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 12 मैचेस को जीता हुआ। और आज पाकिस्तान ने जो है वो अपने आप को चैलेंज किया, जिन्होंने टॉस को जीते हुए बैटिंग करने का डिसीजन लिया। और पाकिस्तानी टीम की अगर हम बात कर लेते हैं तो उनकी तरफ से आते ही विकेट्स को लूज करने का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पर फखर जमान 2 रन बनाकर आउट हुए, बाबर आजम जो है वो कोई रन नहीं बना सके, लेकिन डाउन दी ऑर्डर जाकर फिर इमामुल हक की अच्छी इनिंग्स थी, शादाब खान और इफ्तिखार ने अच्छी बैटिंग की, जिसकी बदौलत नसीम शाह ने लास्ट में जाकर 18 रन बनाए, जिसकी बदौलत Shaheen Shah Afridi started things off 2 for 9 in his 4 overs. Nasim Shah supported him brilliantly. Shadab and Usama, they had a little run out, but the evening belongs to Haris Rauf. 5 for 18 in 6.2 overs. Pakistan won the toss and decided to bat first. 201 all out inside 50 overs. They'll feel that they were well short, but yes, it was a tough surface to bat on. It was a little bit on the slow side. Pakistan needed to be good with the ball. And my word, they were sensational. Bowling Afghanistan out for 59. Haris Rauf 5 for 8. My word, they were sensational. Bowling Afghanistan out for 59. Haris Rauf 5 for 8. My word, they were sensational. Bowling Afghanistan Haris Rauf on his 59. I'm sure he's had a lot to do for a skill set. Right, we're off to break, and when we come back for the post-match presentation, I'm sure he's had a lot to do for a skill set. Right, we're off to break, and when we come back for the post-match presentation, I'm sure he's had a lot to do for a skill set. Right, we're off to break, and when we come back for the post-match presentation, I'm sure he's had a lot to do for a skill set. Right, we're off to break, and when we come back for the post-match presentation, I'm sure he's had a lot to do for a skill set.